Hello everyone, I am Anushka Lavania and I am going to teach maths. In this clip, we will be seeing a short and brief insight of the topic complex numbers. So let's proceed. Why are we studying complex numbers? Is there any purpose of it? Any purpose you see? कि complex number की ज़रूरत कहाँ से हुई? Why do we need to define another type of number when there are already so many existing numbers, even number, odd number, prime number, and so on? Why do we need to define a complex number? What is the special characteristic which a complex number has? So, let us see an equation. This type of equation everyone must have come across. Is it? What is this? This is a simple quadratic equation I have written. है ना? अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो I can write this as 1x square plus 0x plus 1 is equal to 0. Now, if I find the determinant of this equation, what I will get? Determinant b, what it is? B square minus 4ac. We all know from a previous class that in order to find the roots value of x of quadratic equation, we first find the value of determinant which is given by b square minus 4ac. अच्छा चलिए देखते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है उसका डिटर्मिनेंट कितना आता है. इसका डिटर्मिनेंट हमारा आया b is 0 तो उसका स्क्वायर भी 0 minus 4 into this is a. What is the standard form of quadratic equation, students? Ax square plus bx plus c. Okay, so you just compare it with this. We get a is 1, c is 1. We get that as minus 4, which is less than 0. So ऐसी इक्वेशन में जब हम डिटर्मिनेंट निकालने जाते थे उस सोल्यूशन उस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, तो यदि हमारा आंसर 0 से कम आता था या नेगेटिव वी कैन से, व्हेन द डिटर्मिनेंट वैल्यू यूज्ड टू बी नेगेटिव, व्हाट डू वी यूज टू कंक्लूड? हम कहते थे उसको दैट नो रियल रूट्स. तो इसके लिए हम कंक्लूड कर देंगे दैट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन देयर एग्जिस्ट्स नो रियल रूट्स. सो व्हाट डज दिस मीन? तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा ही छोड़ देंगे? यदि हम जनरल टर्म्स में x की वैल्यू निकालने जाते इस इक्वेशन से तो हम लोग क्या करते? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस हम x स्क्वायर को equals minus 1 करते हैं और फिर what we should have done was x square minus 1 आने के बाद हम बोलते कि x जो है is equal to under root of minus 1. अब ये जो minus 1 आया हमारा, this particular minus 1 is not defined. तो क्या ये रियल नंबर है? नो. चलो फर्स्ट शुरू से एनालिसिस कर लो. रैशनल नंबर है? नहीं है. ये क्या इरैशनल नंबर है? वो भी नहीं है. ये रियल नंबर है? वो भी नहीं है. तो व्हाट इज इट? इफ इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ नंबर देन व्हाट इट इज? सो what happened? There came a mathematician named Euler. Euler for the first time defined this particular value under root minus 1 as iota. We call it
iota. Okay, what does this iota represents? What? Imaginary number. There is no number as such existing. So, what does iota represents? This iota represents a imaginary number. Therefore, we can say that the value of iota is under root minus 1. So, what will be iota square? Iota square will be equal to 1. Subsequently, if we multiply one more iota in it, iota cube. What are we going to get? Iota cube minus under root minus 1. And iota to the power 4, fourth power of iota, will give us what? Minus 1 into minus 1, which is equal to 1. Therefore, we'll just conclude that iota is equals to under root minus 1, iota square is equals to minus 1, iota cube is equals to this, and it is iota to the power 4, which gives us what? 1. This is an important result which will help us to solve the problems ahead. Now, for example, let us look at this. Let us solve an example. If I give you iota to the power 256, what are you going to write it as? Is 256 divisible by 4? 4 6 are 24, 4 4 are 16. Yes, it's divisible. It is iota to the power 4 into 64, which can be written as iota to the power 4 and whole to the power 64. आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने निकाला कि आयोटा की पावर 4 इज 1. तो इस एक्सप्रेशन में what do we get? 1 to the power 64. That is 1. Subsequently, this is the first example I have given you. Okay. Subsequently, हम देखते हैं कि अगर if I say you find out the value of iota to the power 73. So, is 73 divisible by 4? No. But we know 72 is divisible by 4. So, we can write this as iota to the power 72 plus 1. What this can be written as? Iota to the power 72 into iota to the power 1. 72 is divisible by 4. ठीक है? 72 is completely divisible by 4. It goes 18 times. So, this value, particular value will be what? 1. And iota to the power 1 will remain iota. So, this will give us this. We were getting 1 in this. So, this is one kind of analysis. Now, let's define a complex number. I will first give you the definition of complex number and फिर हम समझेंगे कि complex number क्या है. Let me define it first.
Look carefully. A number of the form a plus ib is called a complex number, where what does a represents? A real part and why imaginary? Because it has iota accompanying with it. Now, uh, you should note that the complex number, इसको हम represent कैसे करते हैं? How do we represent a complex number? Z. Complex number is represented by Z is equals to A plus IB. ठीक है? Real part को हम बोलते हैं we just represented using RE of Z, and imaginary part को we represented as IM of Z. So this is a complex number. Here, what is A? RE of Z, and B is imaginary part of Z. Okay. Let me give you an example of complex number. If you do not have example, how are we going to learn? Example 2 plus 3i. This is a complex number. ये एक complex number है. अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका real part क्या है, तो you'll say 2 और imaginary part क्या है complex number का, given complex number का, you'll say 3. Now, just like any other number, अगर complex numbers भी numbers हैं, तो उन पर भी हम लोग को ये operations करने पड़ेंगे. अब how do we perform various operations in complex number? Let us learn them. अगर हमारे पास कोई complex number है तो हम उसको multiply कैसे करेंगे, divide कैसे करेंगे, add कैसे करेंगे और subtract कैसे करेंगे. These are the basic operations which we should know. So what is the next thing we are going to do is operation on complex numbers. So what are the various operations that can be performed on complex number? सबसे पहले we'll see the most basic operation, which is addition. Suppose दो complex numbers, we have two complex numbers. हम एक complex number को define करते हैं Z1 जो कि है A plus IB, और एक और complex number लेते हैं Z2 which is equals to C plus ID. ये दो complex numbers हैं. What are we supposed to do? Addition. So Z1 plus Z2 is equal to A plus IB plus C plus ID. जो हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसमें भी दो पार्ट्स हैं इसका दिस इज not able you might not be able to see, this is the real part of it and this is the imaginary part of it. Similarly Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ये रियल पार्ट है और ये imaginary part है. What we need to take care of it is that while adding, the real part of first will combine with the real part of second, and the imaginary part of one is going to combine with the imaginary part of second. Okay, so Z1 plus Z2 will be equal to what? Real part of Z1, real part of Z2 को add करेंगे A plus C
प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 को ऐड करेंगे, b plus d, and there is iota. I hope I have given you a clear picture of what the addition of complex number is like. Let us solve a quick example. It's very important to deal with numbers when we are doing maths. Maths is not a theoretical thing. I say z1 is an imaginary number, say 2 plus 7 iota, and I give you another complex number z2 which is given by 3 plus 6 iota. So how are we going to find z1 plus z2? It will be equal to 2 plus 7 iota plus 3 plus 6 iota. मैंने आपको क्या बताया कि ऐड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ. What are the real parts and imaginary parts? 2 will combine with 3 and 7 will combine with 6. Both of them are going to combine and this is going to combine with this. Okay. So this will give us the result 3 plus 2, 5 plus 13 iota. This is the result of addition of two given complex numbers. हमने दिए हुए हैं दो complex numbers को add कर लिया. अब जिस तरीके से हर ऑपरेशन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें भी आइडेंटिटीज होती हैं. अभी पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से ऑपरेशन करना है. आइडेंटिटी इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट. नाउ वी विल सी. सो what we are going to do, the next is finding the difference. Oh, very nice. Though my writing is not that nice, it will get better. Yet again we will suppose two complex numbers z1 and z2. Z will be represented as a plus ib and z2 is represented as c plus id. These are the two random examples I'm just considering. Okay, so z1 minus z2, if I have to do, that is very simple. The way we simply solve addition, we are going to deal with subtraction also. Let's just open the brackets. What we get is, let us correct the like terms. A minus c plus iota minus I d. Okay. So we get A minus c, iota common out, B minus c. So what did you notice? Is it not just like addition? The real parts come together here. And what? The imaginary parts are going together. It's just the same. Just the change of sign. Now it's time to do a numerical. Let us see an example. Okay. Again, I am considering two complex numbers. Say 2 plus 3 iota and another complex number z2, 4 minus say 2 iota. Now z1
minus z2 we have to find out. How are we going to do that? z1 is 2 plus 3 iota, हमें पता है, और z2 क्या है, 4 minus 2 iota है. सिंपल स्टेप्स में जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही we'll open up the bracket, parenthesis, 2 plus 3 iota minus 4 plus 2 iota. ओके, लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आएंगे तो 2 minus 4 plus 3 iota plus 2 iota. What do you get? Minus 2 plus 5 iota. Therefore, z1 minus z2 is what? Minus 2 plus 5 iota. अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर में आप मुझे बताओ रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू से? रियल पार्ट इज -2. -2 is a real number. Imaginary part is the one which has iota with it, and that is 5. Now, the third basic operation we are going to look at, which is the multiplication. कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं. इसको भी सिंपल सा बना देते हैं बिट्स और पीसेस में क्रैक करके. z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं. ओहो, z1 को बुखार आ गया. z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं a प्लस ib. अगेन कुछ नहीं है स्टैंडर्ड, वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट. x प्लस iy हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. ठीक है. z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं c plus id. What are we doing? Considering. Now, how do we multiply? See, when we are told to do multiplication of two complex numbers z1 and z2, जिस तरीके से हम याद करिए, आपने प्रीवियसली मल्टीप्लाई करा होगा, सिंपल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते थे. हाउ डू वी यूज टू मल्टीप्लाई? x into y plus 3 into x plus 2 into y plus 6. That's how we used to do it, isn't it? So this complex number is no different. It has just what? एक नई चीज आ गई है, छोटी सी आयोटा, उससे टैकल करना है. तो अब इनका चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे होता है. a प्लस आई बी इज z1. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है z2 से, विच इज इक्वल टू c प्लस आई डी. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? a इंटू c, a c प्लस आयोटा a into d plus b into c iota plus iota square b into d. Let us collect the like terms. A into c plus iota common out, a into d plus b into c plus I square into b into d. Isn't it? अच्छा, अभी हमने पहले वैल्यूज निकाली थी. So this is the point I want you to focus upon. We have I square over here. So let us just substitute the value. A into c प्लस, ये तो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसके साथ हमारा आयोटा आ रहा है, आयोटा a into d प्लस बी सी. वेरेवर आयोटा कम्स वो इमेजिनरी पार्ट होता है. ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इज -1 इंटू बी इंटू डी. तो देर इज आयोटा इज रिमूव इस वाले टर्म में से. सो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी
plus AD plus BC iota. This is Z1 into Z2. Very important result. You don't need to memorize it because simple mathematics it is. Okay. So I think it's time to solve a numerical. Let us see an example जिसमें कि हम करेंगे multiplication of complex number. तो हम दो complex numbers लेते हैं simple से for sake of understanding 2 plus 3 iota 1 plus 2 iota. Okay. Now if you see इसको कंपेयर कर लो इससे a plus ib, इसको इमेजिन कर लो ये है c plus ib. तो हमारा z1 इंटू z2 अब हमें देखना है क्या होता है. हम पहले डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लेते हैं एक बार क्या आता है, फिर एक बार प्रोसीजर वाइज सॉल्व करके देख लेंगे क्या आएगा. क्या आता है हमारा फॉर्मूला से क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम z1 और z2 को. फॉर्मूला वाज z1 into z2 a into c. What is a into c? 2 and what is c? 1. So 2 into 1 minus what? b into d. 3 into 2. Is it? This was the real part. Up, what is the imaginary part of it, children? A into d. 2 into 2 plus b into c. Now this is you just need to match it with the formula of z1 into z2, which was a into c minus b into d plus a into d plus b into c. Iota is very important. It will take your marks. So do not forget to put iota. जैसे कि फिजिक्स में हम आंसर के साथ यूनिट्स लिखना बहुत कंपलसरी होता है, इससे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में you need to be very careful about iota things. Okay, iota will take your marks. So what do we get? 2 minus 6 plus 4 plus 3 iota. We get minus 4 plus 7 iota. Okay. In this one thing, very normal, this is the real part and this is the imaginary part. Okay, so this was the third property we saw. Now the last one for the day. Okay, I like this magic, is division. Like we perform division upon normal operations, we can also perform division operation for complex numbers. हम वही करेंगे. Z1 एक एग्जाम्पल है. अब आपको पता चल गया है कॉम्प्लेक्स नंबर इज नो बिग डील. ठीक है, एवरीथिंग मैथ्स इज नो बिग डील. हम लोग मैथ्स को ही पूरा आसानी से कर सकते हैं. एक नंबर ये लिया, एक नंबर हमने ये ले लिया. अब इनको डिवाइड करना है z1 divided by z. Okay, children, see this z2
shouldn't be equal to 0. Okay, what will be z2 then? A plus ib. सिंपल एज दैट. इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, फिर रैशनलाइज करके क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करना है एंड देन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म t प्लस आई, जो कि स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है. इसको इट्स बेटर वी अंडरस्टैंड इट यूजिंग अ एग्जांपल. ठीक है, लेट अस पिक अप अ एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट. लेट अस सी 6 plus 3i divided by 2 minus iota. See, what we do is हम ट्राई करते हैं, जैसे कि 10th क्लास में हम करते थे रैशनल नंबर्स के लिए रूट की फॉर्म में डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते थे, वी यूज्ड टू रैशनलाइज इट. हम प्रोसीड करते हैं, आप सिंपल उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 प्लस 6i प्लस 6i प्लस 3i स्क्वायर. डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा स्क्वायर. इन द न्यूमरेटर वी आर लेफ्ट विथ 12 प्लस 3i स्क्वायर प्लस, while collecting the like term 6i plus 6i, यहाँ पे हमारे को 12i मिल जाएगा. डिनोमिनेटर में आया 4 and what is I square? I square, you need to know what is I square. Okay, I square is -1. ऊपर भी we will substitute. Okay, 9 plus 12i divide by 5. Now just for sake of इसको standard form में लिखने के लिए, this is the answer of what? Z1 upon Z2. ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं Z1 upon Z2 के लिए इसका रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, व्हाट यू विल से? रियल पार्ट इज 9 upon 5 and imaginary part is 12 upon 5. Okay, this was just a brief introduction of what complex number is, just to give you a picture of complex number है क्या, इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है और इससे टैकल कैसे करते हैं. और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे देखेंगे कि इसको प्लेन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल नंबर को एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन में, ऐसे ही इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को. बट दैट इज डिफरेंट प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो हमने ऑपरेशंस किए हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड मैनी थिंग्स. आई होप यू लाइक इट. दैट्स ऑल. I hope you have got all the concepts which I was trying to teach you. Thank you.